So this is not an analysis video, this is not anything else. This is just me showing you the paper, 100 questions, very fun, and a lot of these kinds of questions where you have only one, only two, only three, all, none of the above, and ye wale type of questions. So like we had shared earlier, if there are more questions like this, the cutoff will go down. So those of you who want to read the questions, obviously you can also get the PDF from our Telegram channel. And here I'm just showing you the paper. This is set B. Some questions relatively easy, but like some questions are very complex. Overall, I would say it would have been a very lengthy paper because of मतलब काफ़ी सोचना पड़ रहा है यहाँ पे, बहुत डिटेल में माइन्यूट बारीकी में जाके चीज़ें पूछी गई हैं. बट स्टिल some things are doable. Right. 29 is awesome. कि मतलब यूपीएससी भी ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलो कर रही है मुझे लग रहा है कहीं कहीं जगह पे. 34 इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. जैसे 34 में थर्ड स्टेटमेंट मतलब डेफिनेटली वी नो इज़ रॉन्ग, बट जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स है दे विल कंफ्यूज यू क्वाइट अ बिट. Right. So investment trusts are recognized as borrowers under सरफेसी एक्ट. मतलब काफ़ी काफ़ी गहराई में जा जाके इस पर सवाल पूछे हैं. Which of the following activities of RBI is considered to be part of sterilization? तो कैपिटल मार्केट पे काफ़ी सिंपल सा सवाल ये जनरली आपको आना चाहिए. कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट में क्या डिफरेंस चल रहा है. Which of the following asset brand recognition? ग्रेट. मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज़ है. जैसे मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट इज़ नॉट एन इंटेंजिबल, इट इज़ अ टेंजिबल. IP, brand recognition, again, these are intangible. Inventory, this is not intangible. मतलब सवाल अगर आप ओवरऑल देखोगे तो these are good questions. They'll make you think. मतलब आसानी से सब कुछ ऐसा नहीं आएगा, बट यूक्रेन पे अब जैसे 53 क्वेश्चन इज़ क्लियरली कि भाई अगर आपने यूक्रेन के आसपास कहीं देखा है, एंड जो कॉकेसस रीजन्स अगर आपने देखा है, मैप्स इफ़ यू हैड सीन यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. होम गार्ड्स, नाउ दिस इज समथिंग न्यू. एविडेंस एक्ट, आर्म्स अमेंडमेंट, ये लोगों कभी कभार आई थिंक कुछ कुछ पढ़ने नहीं दे रहा, बट एनी हाउ. सो अगेन मतलब यूक्रेन का मैप अगर आपने देखा है तो डोनबास रीजन हैज़ बिन मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स ओवर देयर. तो लाइक मैप्स 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 एब्सोल्युटली एसेंशियल. पीछे से ए ड्रिल की आवाज़, बिकॉज किसी को शांति नहीं है. एंड देन अफ्रीका पे भी क्वाइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. अफ्रीका सीम्स टू बी द न्यू फोकस एरिया फॉर यूपीएससी. फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज,
तो ये जो कुछ नाम्स है ना, अलेक्जेंडर रिया, लॉन्गेस्ट, रॉबर्ट सीवल, जेम्स बर्जेस, वॉल्टर एलियट, दीज आर मेंशन्ड इन वेरी पासिंग कि भाई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से कहीं ना कहीं ये लोग एसोसिएटेड थे, बहुत पासिंग में, कहीं आपको एनसीईआरटीज़ में इनका मेंशन मिल जाएगा, बट उस पर पूरा पूरा फिर सवाल आ जाएगा प्रीलिम्स में। आई थिंक हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज़ हैं हमारी, जो ट्वेल्थ की पर्टिकुलरली, यू नो, दोज हैव बिन कंसिडर्ड कि मॉडर्न हिस्ट्री उसमें इतनी नहीं है, बट देन दोज आर गुड बुक्स जहाँ पे ऐसे सवाल आपके बन जाएंगे। तो 63 इफ़ वी लुक एट, तो 7th August डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे। येस, इट वाज बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट 1 and 2, तो इसका ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। 65 में आई एम गेटिंग अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज हिस्ट्री पर्टिकुलरली मॉडर्न के सवाल आए हैं अब फाइनली, विच इज़ माई सब्जेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 November टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। सही। 26 November was the Constituent Assembly set up a drafting committee? No, 26 November को it was adopted. जो statement 2 is wrong, और जैसे ही वो होता है तो C आपका आंसर हो जाता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो स्टेटमेंट 1, इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था कि फ्लैग कोड का स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत है, ये एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है। स्टेटमेंट 2 इज स्टिल करेक्ट, तो देयर यू हैव योर आंसर फॉर दैट। Switzerland is one of the leading exporters of gold, but Switzerland does not have the second largest reserves in the world, तो ये वाला क्वेश्चन भी है। USA and EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यार ये वाले क्वेश्चन जितने ज़्यादा हमारे बनते हैं ना, जैसे 69 के जो ऑप्शंस हैं, आई थिंक दे आर मोर फ्रीक्वेंट दैट दे वर इन 2022, विच मेक्स मी वंडर कि भाई कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज 88.22, दिस ईयर नाउ ऑब्वियसली वी विल नीड अ लॉट मोर डेटा बेस्ड ऑन कि भाई लोगों का अटेम्प्ट कैसा गया है, कितने क्वेश्चन वो कर पाए नहीं कर पाए। विदाउट दैट वी वोंट बी एबल टू फर्मली कॉमेंट, बट आई हैव अ फीलिंग कि कट ऑफ थोड़ा और नीचे जाना चाहिए। यूक्रेन पे 3 सवाल आ गए हैं, तो यूक्रेन का मैप अगर आप नहीं देख के गए थे तो बहुत ही बेशर्मी की बात है ये, क्योंकि यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर हैज़ बिन इन न्यूज़ फॉर सो लॉन्ग, एंड दिस इज़, ये बहुत ही बढ़िया बेसिक क्वेश्चन फॉर ज्योग्राफी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सॉइल इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट, स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट एंड देयर यू हैव इट। ओके, अर्थ एटमॉस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंसुलेशन। ओसो दिस इज, ये ज्योग्राफी में ना एक डायग्राम बना हुआ है बस एक चैप्टर में, आपको डायग्राम याद है क्लास 11th की बेसिक जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी, उसमें you'll find that answer. P waves, S waves, again basic questions, very basic questions from the geography. Wolbachia method, काफ़ी न्यूज़ में था ये भी। तो we are not discussing an answer key, what we're just doing is like sort of कि भाई what are the impressions that I have of this paper. Microsatellite DNA. Yeah, this is the best cross-referencing question ever. जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, straight question on a scheme. Carbon fibers are used in manufacture of components. Automobiles, yes, cannot be recycled. So second statement I'm not very sure about. First statement, so definitely true. Anemia Mukt Bharat, again 2 questions back to back on schemes. Detection of crash collision which results in deployment of airbags instantaneously. Accelerometer, oh my god, मतलब यार ये वाली चीज़ इतना, कभी कभार आई गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। व्हाई? बिकॉज दीज एक्सेलरोमीटर हर एक के फ़ोन में है, एवरीबडी यूजेज इट, बट वही कभी सोचा नहीं इसके बारे में, तो फिर अब ये सवाल नहीं होगा। Which of the following countries has its own satellite navigation system? So this is a question about regional satellite navigation system. So I think most probable options over here are C or D. Israel or Japan में ही मतलब possibility है यहाँ पे, because Australia and Canada are very well integrated in the American system, so they would not want to spend on that thing by themselves. But again, needs to be checked. This is my first impression of the paper. Consider the following statements regarding mercury pollution. Gold mining activity is the source of mercury. I think could be, not sure. तो ये वाली चीज़ें देखनी पड़ेंगी एक बार, काफ़ी कुछ मतलब मुझे पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा। तो 93
अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे थे कहीं पे, तो 93 यू विल नो का आंसर इज, इसमें से क्या रहेगा? बाइंग एंड सेलिंग, रिस्क मैनेजमेंट नहीं, सिस्टमिक रिस्क, फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक टू ओवरऑल स्टॉक मार्केट, तो 93 का आंसर शुड बी डी। राइट, एसएचजी पे फिर एक सवाल, वाटर, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट्स इतनी नहीं पूछी इस बार, जो कि मतलब, बट व्हाट द हेल इज दिस क्वेश्चन? अच्छा नहीं, अगला क्वेश्चन आ गया। Great. So, toward the end of the paper, which the countries have been suffering civil and strife and food shortages recent for its very severe famine. अफ्रीका 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 पे भी तो 3 सवाल बन चुके हैं अब तक, यूक्रेन एंड अफ्रीका। Biodiversity management committees have been important functions. President of India, the members nominated to either house of the parliament are also eligible to be included. तो should be okay, 1 2 3 4 वाला है ये। The value of each vote of each MLA of MP is greater than that of Kerala. तो ये वाली चीज़ तो आप डेफिनेटली देख ही सकते हो कि वैल्यू ऑफ वोट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके हिसाब से, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ MLAs इन MP वर्सेस केरला। बट दैट इज़ द बिग क्वेश्चन हियर कि डू यू नो द नंबर ऑफ MLAs, सॉरी नॉट MPs, MLAs इन मध्य प्रदेश वर्सेस MLAs इन केरला। So overall, I think it's been a very fun paper, and because ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप के कट ऑफ, मतलब इस टाइप के स्टेटमेंट्स यहाँ पे है, सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक द कट ऑफ विल गो लोअर, बट देन अगेन एग्जैक्टली कितना लोअर क्या, उसके लिए वी विल नीड सम मोर डेटा फ्रॉम द पीपल हु हैव एक्चुअली गिवन द एग्जाम, and once we have that, we'll also be sharing that with you. So thank you all for watching, and you can get the PDF from our Telegram channel or 100 different sources, because अब तक तो मिल ही गया होगा।